हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. सो इन दिस वीडियो आई एम just going to let you know and explain you how to set up a private and SSH key to set up your system to connect with GitHub so that you can pull the code to a new branch, or whether you want to create a external branch or fork the commit or whatever you want. But इससे पहले कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, आपको ये कुछ कमांड्स आपको हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, और कुछ कमांड्स आपको गिट के सेटअप में यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं बेसिक से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से ये बताने वाला हूँ. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा. सो लेट अस जस्ट गो अहेड. एंड अभी मेरे पास एक वर्चुअल सिस्टम है जिसको लिनक्स सिस्टम बोलते हैं. उस लिनक्स सिस्टम को हम लोग ओपन करने जा रहे हैं. तो उस लिनक्स सिस्टम के साथ हम लोग उस लिनक्स सिस्टम पे जाएंगे, और उस लिनक्स सिस्टम पे हम लोग ये काम करेंगे. आपके पास अगर विंडोज सिस्टम है तो आप गेट बैश यूज कर सकते हैं इस सेटअप के लिए. आपके पास लिनक्स बेस्ड सिस्टम है तो आप यूज कर सकते हैं उसका ओरिजिनल टर्मिनल. विंडोज में आपको गेट अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके बाद फिर आपको जो है मिलता है गेट का सेटअप. और इसके बाद गेट एक टूल है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं, जिससे आप सोर्स कोड मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम कर सकते हैं. और गिटहब एक क्लाउड बेस्ड सर्वर है जहां पर आप अपने कोड को पुश पुल और रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बहुत सारी फर्म्स भी गिटहब का यूज करती हैं, और ये ओपन सोर्स टूल है जहां पर आप अपने मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ कोलैब करके किसी एक प्रोजेक्ट पे या मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. सो लेट अस गो ahead and check if Git is installed in our virtual machine or not. Yes, I think Git is installed in our system right now. Git hyphen hyphen VRSIONS versions. Okay, so Git version is in हमारे सिस्टम में Git installed है. हम लोग बेसिक से काम स्टार्ट करेंगे. एक मैं कोड को पुल करूंगा, पुश करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गिटहब के सिस्टम को सेटअप करते हैं. तो लेट अस गो हेड एंड रन सम ऑफ द बेसिक कमांड. git config. अगर आपने ऑलरेडी कभी गिटहब को सेटअप करा है तो हो सकता है कि आप इस चीज इन कमांड्स को चलाकर आप उन सेटअप को रिमूव कर सकते हैं. तो लेट अस गो अहेड एंड डू इट राइट नाउ. unset user dot name git unset user dot email. ये कुछ कमांड्स हैं जो ऑलरेडी मेरे गिटहब पे मेरे गिटहब पे ऑलरेडी एडेड है. अदरवाइज मैं इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस कमांड को ऐड कर दूंगा. सो डोंट, rather than wasting our time on the talk, as Linus Torvald said, and we are operating over the Linux, so let's go ahead and operate over the code. Talk is cheap. Show me the code. Git config global, and now we will have to credential dot helper. सो इन कमांड से हम लोग इन कमांड्स को रन कर रहे हैं, और इस कमांड से हम लोग जो है गिट को अनसेट कर रहे हैं, यानी कि फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं. अब हम लोग एक नया गिट को सेटअप करेंगे. गिट कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग global user dot name, and right now my name is अभिज्ञान. तो मैं यहाँ पर अपना नाम दूंगा. right now my email is like this. So yes, we can go ahead with this. Now we will check the configuration if it is added in our system or not. Git config global hyphen hyphen list. So you can see user name is set up and user email is already set up. So one thing that I did wrong
here, like I have entered the wrong email. So let us go ahead and let set up the email once again. Now I think it is set up right now. Okay, it's done. Now we have set up our key, our username and email. Now we will generate our SSH key. So SSH key gen we will, and hyphen t rsa hyphen b and 4096. This is the standard command to generate the key. So this is the command to set up the key, SSH key, that we will insert in our own GitHub, GitHub settings that we call it. So here we are generating a public and private key. We are setting it up right now, and this is, here we have generated our passphrase and key. Now we will go ahead and quickly eval the settings, like where it is. We will initiate the SSH agent here, and then we will go ahead with this. Okay, agent PID is coming. Now we will add this agent, SSH add SSH hyphen ID underscore RSA. So these are the standard command. I think uh, SSH add. These are the standard command that you will have to run for a single time. So ये आप लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं है. And some of the command that is I am adding, like other command to set up the username and user email, and checking the configuration list with the global list. So these type of command you should learn. Otherwise these commands are standard, और ये आपको online भी मिल जाएगा. You can go ahead and find it at any place, like at ChatGPT or wherever you want. Now we have added our thing. Now we will clip, means we will run this command to copy the code, to copy the RSA key, SSH hyphen ID hyphen, sorry, RSA dot pub. So we are copying this one. uh, One thing you should know, like clip and xclip will not work in a SSH session. ये काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कोई GUI नहीं होता. That is why we will be using the key here, and we will reset it after some time. You can run this command cat, and this command will be able to show you the key, private key, and we will quickly go ahead and add this, because xclip or clip, I have tried both thing into the Ubuntu SSH, but it will not work because we are not connected to any GUI system as right now. Now let us go ahead and quickly create a quickly add a new key to our system now. So here we are going to add it in our settings. This is a setting. और ऐसा नाम रखिए जो कि आपको याद रहे कि कौन सा की आपने किसके लिए याद किया है. तो मैं यहाँ पर ubuntu ssh कर देता हूँ, hyphen ssh. So here we are adding this one. Now we will quickly go ahead and copy our code. So where is this one? So this is the code that we will be cloning it on into our system. So let us quickly go ahead and clone our main branch. Git clone. So we will be cloning it this one, and we have added this one to the permanently. We have added the fingerprint by using this SSH key, RSA ID and RSA key. Now we will be able to connect with GitHub via the command line interface, and we can push pull the code and perform the other things as well. So आपको कुछ नहीं करना है, जो कोड्स मैंने किए हैं परफॉर्म, यू कैन गो हेड एंड परफॉर्म ऑल ऑफ दीज थिंग्स
and you will be able to install those things as well. And other type of the things like you can use cat to copy the RSA key as well. Now let us go ahead and quickly check the git live, git hyphen live, and here it is. So we will be going ahead and we will be creating a new file like new underscore file dot py. I'm just showing you like to how to edit the how to push and pull the clone the code, pushing it to the new branch or into a main branch. As I am the owner of this one, so I can push the same code into the main branch as well. But if you want to create a new branch as a student or other thing to the same repository, then it is suggested to create a separate branch and then push your code into that branch. And other thing that if I want to suggest, like you should use your own branch for your features and generate a PR until and unless if it is not necessary. So you should keep your code with your own branch. एंड बहुत सारे फर्म्स में जब हम लोग काम करते हैं तो मेन ब्रांच में पुश करना बहुत ही प्रोहिबिटेड रहता है. एंड यू विल हैव टू परफॉर्म सम ऑफ द चेकलिस्ट. अगर आपका वो चेकलिस्ट कंप्लीट होता है देन ओनली यू विल बी एबल टू रेज अ पीआर एज वेल. पीआर रेज करके और अप्रूव होना यानी कि वो रिव्यू होके अप्रूव होने के बाद आप मर्ज करेंगे, लेकिन उन चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आप पीआर भी रेज कर सकते हैं. तो लेट अस गो अहेड एंड क्विकली प्रिंट हेलो वर्ल्ड here. So we will type print hello world, and also we will print and hello project DevOps. Okay, so let us quickly go ahead and save it. Now we have saved our new file, and let us go ahead and add this. Git add, git commit hyphen m live. I will add any comment here, live demo of GitHub setup like this. Okay. Now we will check out to a new branch. If you are having a new branch, you are cloning the whole system, then you can just change your branch as well. Otherwise, you can just go ahead and create your branch as well. So let us go ahead. We don't have any branch. Just think about like we don't have any branch. Then we will go ahead and check out to the new branch. Git checkout hyphen b GitHub demo. We will checking it out here. So here you can see switch to a new branch. Now we will push it here. Git push origin hyphen u GitHub demo, and boom, our code has been pushed to that repository. Let us go ahead and check it. GitHub demo has recent push 3 seconds ago. So I think we can see here view all branches. Okay, a lot of GitHub demo. Yes, so these are my branches as well, and recently we have written that code, print hello world and print hello project DevOps. So that was all for today's video, and I hope you are liking it. फ्लुएंसी थोड़ी सी कम है इसीलिए क्योंकि आई एम नॉट टू मच कंफर्टेबल विद द माइक एंड कैमरा एज वेल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू bring upon some of the original video to you all, like क्या करना है कैसे करना है rather than बातों को फैलाते हुए. And that's all for today's video. Thanks for watching, and if you are watching this video you can share it with your friends who need it. And if you are new to the channel then please go ahead and hit like and subscribe button as well, and thanks for watching the video once again.